नमस्ते, नमस्कारम, केमचू, कसकाय। मैं दीपक दुबे फिर से लेकर आया हूं आपके सामने PYQ एनालिसिस के सीरीज में with the new topic wave motion. Today we are going to solve a very important topics of wave motion in which we will going to cover all the previous year questions, okay, and those questions that I have brought are the important ones which will test your knowledge. ये मैं आपकी knowledge को test करूंगा इस question से, okay, and I assure you, if you are going to solve these questions, I am betting you that your topic are covered. Okay, with that, let's begin with our topic wave motion. And one more thing you should remember that in wave motion, the weightage is of 4 marks. It means what? Ek question is compulsory from this chapter. Okay, let's begin with the chapter's question. Okay, so here is the first question in your screen from the topic wave. So pause your screen and try to solve it, and I'm here to help you guys. Okay, the first question says a string is clamped at both the ends and it is vibrating in its fourth harmonic. Okay, you should know what is an harmonic means. Okay, now the equation of a stationary wave is given to you as this much. Okay, the length of a string is, okay, so here the question is asking you to find out the length of a string. Now few of the important things you should remember while solving this question. The first one is that there is a clamp. First you understand what is a clamp means. There are two ends attached with a clamp. Okay, now this is a string and the clamps are in your screen. Now what will happen ki we say that the first fundamental frequency of a wave, this is a standing wave, okay, and its harmonics are given by f naught. Okay, now we know that the standard wave frequency is given by f naught. What will happen to the second one? Means what? Now the wave will give you, if I say the same string for the first overtone. So what will happen after this? The first overtone. So what will come in the first overtone? The harmonics will be 2f naught. Here this is the frequency. Means what? We can say that this f naught indicates our harmonics. Okay, bacha, and the frequency is given by f or f dash, anything you can say, okay, or f dash. Understood? So here the first overtone is of 2 harmonics. Means what? The waves would be somewhat like this. Okay, now what we see here, at from one end to the other end, we call it as node. Here is a node, here is a node, right? Now don't ask me, sir, what is a node and what is an antinode. Now if I tell you what is an antinode is simply, if I say divide it, or you can erase it all. Okay, if I tell you what is an antinode, the same clamp, let's say the waves is halfly completed. Okay, so here is an antinode, here is a node, here is an node again. Understood? Okay, so here is the first overtone with 2 frequencies as an harmonics. Okay, understood? Now when I said for the second one, so what will happen to the second overtone? The second overtone will given as 3f naught as an harmonics. Now what is an harmonics means? Now harmonics is, please write down on your notes if you don't remember, harmonics are the fundamental of any frequency. Okay, chalo. Now here remember the equation of a standing wave. You should remember the equation of a standing wave. So what is the standard wave? We can say it is given by y, which is equal to a of sine kx dot cos omega t. Okay, now to solve this question you required to have 2 important concepts that should be covered up. This is the first one you should know, and the second one is k. K is also given by 2 pi divided by lambda.
2 pi indicates for a whole circle, lambda indicates its wavelength. Okay. Now you know when we study in a wave motion, when we say a wave has what? Amplitude, has a crest and a trough. Now what is a wavelength? You should know it, right? When we say 2 crest or 2 trough, yes, that is what wavelength is. Very good. Okay. Now these are the two important things you should remember. Now if I say this is my equation, can I compare that equation with the question which is given to us? Yes, we will compare it. Y is equal to 0.3 sine of 0.157 x in a bracket dot cos of omega's value is 200 pi dot t. Okay. So when I compare it with both the equation, this equation 1 and this equation 2, let's say, what I see? Yes, my k value is 0.0157, right? Yeah, so I can say here the k value is 0.157. Okay. Now, can I say using the second concept that we have learned, the value for the k? Okay. So here you can see that since the vibrating in the fourth harmonics means what? When I say it is fourth, likewise if I say it is fourth overtone, okay, so the fourth harmonics will give me what? Give me what? It will be 5 of f naught. While I say the third overtone, I will get my fourth harmonics, right? So here the waves are fourth harmonics means what? The lambda 2 will be multiplied with 4 times. So what I get? I get 2 of lambda, right? Now if I draw you a picture for more better understanding, let me draw it over here. Since again here is a clamp. Now when I said fourth harmonics means what? 1, 2, 3 and 4. Got it? I can draw it from the downward direction 1, 2, 3 and 4. From one node to other node, again the value or the for the length it would be given by lambda by 2. So there are lambda by 2 4 times, right? So what will be the length for here? The length will be basically lambda by 2 multiplied by 4, right? So we get 2 of lambda as our length, or we can say lambda's value is L by 2. Anything you can remember by that. Okay. Now can we see that k value is 0.157 and put the value on that above concept? Yes. K is equal to 2 pi by lambda. Now since we require to find out our length, we can use this relation or the above relation over here and we can find out our length. How so? If we can know what is our wavelength, we can say that, yeah, now I can find out my length, right? So with that same concept, let's rewrite it. For the wavelength, it is 2 pi by k. Okay. Now put the values 2 into 3.14 divided by the value for k is again how much? Yes, it is 0.157. So if I solve it, so I will get my value of lambda as how much? Value of lambda, put these values, after putting this value and I solve it, I will get somewhat around, yeah, 40. Okay, 40 meters. Now I get my lambda value. Now what I require to find out my length? Yes, so what will be my length? Length will be twice the lambda value, so 2 into 40, which is my 80 meters. So which option has 80 meters? That is correct. So yeah, option number D is correct. So if you got this concept very clearly, like and subscribe. Let's go to the next question. Okay, so here is the next question which is in your screen. Now pause the screen, try to solve this question. Okay, so the question is something like this: a string of 0.2 meters of length. So the length is given to you as 0.2 meters, no worry, and it is fixed at its end as driven by 240 hertz vibrators. So here the frequency is given. Okay, frequency is given as 240 hertz, no worry. The string vibrates in its third harmonic. That is important to remember, third harmonic. So the string is vibrating in its third harmonic. Okay, so f will be 3, or f dash would be of 3 of f naught. This is the concept which is should understand. Okay, now the speed of a wave
Firstly, speed of a wave is how much, as well as its fundamental frequency. Speed of a wave and fundamental frequencies are how much. So fundamental frequencies we require to find out f dash. Okay, let's go it. Okay, we require two concepts to understand and to solve this question. What is the speed of a wave, right? So remember, the speed of a wave is basically given with the lambda multiplied with the frequency, okay, with which the wave is traveling. Okay, now if I tell you it is moving it in third harmonics, means what? If I clamp it again, okay, with a string, now if I see third harmonics, so 1, 2 and 3, done. The same way, 1, 2 and 3. So here my length L, so here is the length, okay, this is my length L. Understood? Now, when I say node, node endpoints, node, write down the nodes. Each node is lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2. What will be its length then? So we can say its length is lambda by 2 into 3. So what we can say, it is 3 lambda by 2, which is our length, or we can say for the lambda it is 2L by 3. So are you getting the point? Yes. We got the first one, which is for my lambda. Now simple put the value and you will get your speed. How? Let's do it. The first one, which is asking us to find out the speed of a wave, use this concept, speed of a wave, which is lambda, which is our 2L by 3 into the frequency given to us is 240 hertz. Now divide it. Yes, 3 how much are 240? 3 7 are 21, 3 8 are 24, right? 80, and here the L is nothing but 2, right? So 2 into 2, 4, 4 8 ja, yes, it is 320 meters per second is my speed. I got my speed value, no worry, you can denote it with this value also, no worry. Okay, now the symbol indicates the speed. Now the second thing to remember, what is it? Its fundamental frequency is how much? You see the value which is given to us, f dash is equal to 3 of f naught, right? 3 of f naught. Now we require to find out our f naught, since the frequency is 240 hertz given to us. So f naught will be given by 240 divided with this 3 will come downward, so it will be divided, since there it is multiplied. Okay, so 240 divided by 3 is how much? Yes, so see 243, yes, 8 ja 24. We got our, again the fundamental frequency is how much? 80 hertz, as well as the speed is 320 meters per second. See how easily we have solved this question, which was asked in 2019 JEE mains paper. Okay, now let's go to the next question. Okay, so next question, see what is given to us. Pause your screen. Yes, try to solve this question on your own. If you can't, I am here for you guys. Okay, let's go to this question. What does it says? A small speaker delivers 2 watt of an output voltage. Wow, here power comes into play. Power is there. It is given by P is equal to 2 watt. No worry. At what distance from the speaker will one detect 120 dB of intensity sound? Wow, means what? This is given to me as loudness. Most of you guys confused with intensity. They will write down intensity as 120. No, bacha. Here it is given that a distance from the speaker will one detect. What does it means? It indicates my loudness. Okay, how far it is going means how loud it was, right? So L is equal to 120, and remember loudness is dB. Remember it is, okay, decibel. Okay, now always remember one shortcut tricks. Remember, if there is acceleration given, what is this unit? Meter per second square. When there is velocity given, meter per second, right? Likewise, when dB is given, it is nothing but indicates my loudness. Okay, chalo. Now power is given, loudness is given. What is the question? Okay, so what distance from there? So it is asking us what is the distance r, or okay.
Now, to solve this question, you should require to remember one important formula. Okay, let's say two important formula. Okay, first important formula indicates what is my intensity's formula is. Intensity I is always power divided by the area, which is 4 pi r square. Okay, now this is my first concept to solve this question. First concept. The second concept you should remember is my loudness formula. Loudness L is given by 10 log of 10 I divided by I naught. Here, one more thing you should remember, that the reference intensity, which is my I naught, is given to us as how much? 10 to the power negative 12 watt per meter square. No worry. Now see, remember one more thing. How can we relate? Sir, how come you know that I is power by area? You see here, the I itself, the units you can see. What is the unit of what? Power. Meter square is what? Area. Simple, right? Chalo. Now, using these two concepts, let's solve the question. So first we will gonna take this one, okay? Since loudness is given as 120, which is equal to 10 log of 10 I divided by 10 to the power negative 12. Now this 10 with this one can cancel, this log 10 will go on the other side, it will give me 10 to the power 12, which is equal to I divided by 10 to the power negative 12. Okay, now we get our I as what? 1. I as our 1 watt per meter square. No worry, chalega. Okay, now as I got my I, can I put this value and get my answer from the first concept? Yes. From here, if I say what is the value for I? I is equal to 1, power's value is 2 watt divided by 4 pi r square. Now r will give me root over of 2 divided by 4 pi into 100, which why I have multiplied 100, since here we are using meters, right? Now converting meters into centimeter multiplied with 100 and it becomes cm. So easy, right? Now if you solve it in the place of pi, remember put the value of 3.14. If you solve it, you will get your answer somewhat around 40 cm. Okay, so what is your answer? 40 cm means what? Option number B is your correct option. Okay, understood all of you? Let's go to the next question. So here is the question which will be shown to you. Wait. Yeah. So a turning fork of a frequency 480 Hz is used in an experiment, okay, for measuring a speed of a sound V. Okay. In area by resonance tube method, resonance is observed to occur at two successive lengths of an air column of length L1 is 30 cm and L2 is 70 cm. Wow, it is given, a good question it is. Now then V is equal to how much? Remember, when you are solving such question, you should see that here a turning fork is there. Turning fork, I can see, has a frequency of 480 Hz, no required. It is giving me an antinode first and a node at the last. So when I said antinode first and a node at the last, okay, so यहाँ पे antinode है A और यहाँ पे है ये node N. Okay, now when I say antinode दिया गया है, इसका मतलब क्या? इसकी यहाँ से यहाँ की वैल्यू जो होगी ये लैम्डा बाई 4 होगी, राइट बच्चा? नाउ अब नोड की वैल्यू यहाँ से यहाँ कितनी होती है? एक एंड से दूसरी एंड तक जाओ तो इसकी वैल्यू लैम्डा बाई 2 होती है सर जी. ओके, वेरी गुड. नाउ व्हाट इज एल्स इट इज गिवन, और क्या दिया गया है? L1 विच इज 30 cm, मतलब क्या, इधर से इधर 30 cm दिया गया है. अब दूसरा L2 जो है यहां से लेके कंप्लीट विच इज माई 70 cm, राइट? अब मुझे एक और चीज याद आई है इस क्वेश्चन को देखते हुए, that here the resonance is observed at two successive length. ये successive lengths में जा रही है जिसकी एयर कॉलम दी गई है. नाउ पूछी गई है then v is equal to v, जो स्पीड है ये कितनी होगी? बस फ्रीक्वेंसी दी गई है 480 हर्ज की. वाओ, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करते हैं. चलो मैं आपको दो तरीका बताता हूं, विच एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट. पहला तरीका है दैट टेक एन एवरेज ऑफ अ स्पीड. नाउ एवरेज ऑफ अ स्पीड का मतलब क्या है सर?
मैं पहला स्पीड लूंगा, निकालूंगा उसका वैल्यू, दूसरा स्पीड निकालूंगा उसका वैल्यू, अब उन दोनों का एवरेज निकालूंगा, दैट विल बी माय आंसर। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला करो और आंसर लाओ। मैं दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं, नो वरी, चलो करते हैं। नाउ रिमेंबर यहाँ पे लैम्डा बाई 4 है, लैम्डा बाई 4 क्या है, मेरी लेंथ है, ठीक है, यहां से यहां तक की चलेगा। नाउ लैम्डा बाई 4 इज माई लेंथ। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, हमें क्या रिमेंबर करना है, व्हाट इज द स्पीड, स्पीड ऑफ अ वेव होता है हमारा फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा, ठीक है, इतना तो सबको पता है, राइट। अब यहीं से लैम्डा की वैल्यू निकाल लें हम, लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा विच इज 4 टाइम्स एल, एल हमें कितना दिया गया है सर जी, यहाँ पे तो 30 दिया गया है, सो पुट करो 30, सो 4 3 जा 12, 120 इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ओके। अब यही लैम्डा को मैं अगर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया and the above one, so I will get my v which is equal to 480 into 120 divided by 100 in terms of meters, since the answer is in meters per second, ठीक है बच्चों, cm लेके नहीं चलना है, इसलिए मैं divided by meters कर लिया। Now you will get this for 1. Now the second way you can do it कि ये अब 70 cm दिया गया है, मतलब क्या, अगर दूसरी लेंथ दिखूं, दिस इज अ टोटल लेंथ, राइट। अब टोटल लेंथ में क्या आएगा, लेंथ which will be lambda by 4 plus lambda by 2. Lambda by 4 plus lambda by 2 is how much? Do it. Lambda by 4 plus lambda by 2. Common ले लो 4, अब ऊपर ले लो 2, so it will be 3 lambda by 4. Right? Since how sir, how कैसे आपने कर लिया जादू? No जादू here. Simply I multiplied 2 on both the side, और अब ये डिनोमिनेटर इज कॉमन, ओके। अब डिनोमिनेटर की सेम वैल्यूज एज अ बेस आ गई, अब मैं इनको कॉमन ले लिया, अब कॉमन लेने के बाद ऊपर की वैल्यूज को ऐड कर दिया, सो 2 लैम्डा प्लस लैम्डा इज 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4। नो ब्रेनस्टॉर्मिंग, नथिंग इज हैपनिंग, ये बस और बस प्रैक्टिस का कमाल है। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इट वेरी वेल, आप कर सकते हो, ओके। कैलकुलेट, अब जब आप दुकान में जाते हो, ओके, एंड योर फादर एंड मदर सेंड्स यू टू ब्रिंग सम राशंस, व्हाट यू डू गाइस, नोट्स में लिख लेते हो, राइट, फोन में लिख लेते हो, हाँ मम्मी ये लिख के दे दो, मुझे व्हाट्सअप कर दो और मैं लेके जाता हूँ और अपने दुकान में ये लेके मांग लेता हूँ। नेवर डू सच। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर मेमोरी पावर, मम्मी को बोलो मुझे बोलने को, मैं याद रखता हूँ, और आप जाओ इसी तरीके से मम्मी को बोलो कि मुझे बोलिए, मैं याद रखता हूँ, मैं जाऊंगा दुकान में प्रॉपर लेकर आऊंगा। एंड जब दुकानदार एक एक वैल्यूज कैलकुलेट करता है कैलकुलेटर में, आप उस कैलकुलेटर को साइड में करिए, अपने दिमाग में कैलकुलेट करिए, 2 किलो चावल इतनी वैल्यू, 3 किलो दाल इतनी वैल्यू, ऐड करो, सम अप करो, पैसे दो, निकलो, राइट। दैट इज द स्ट्रेटेजी दैट मिडिल क्लास मैन डू, ओके। चलो, सो ये है एल की वैल्यू 3 लैम्डा बाई 4। अब इधर क्या मैं निकाल सकता हूं लैम्डा की वैल्यू, यस वी कैन फाइंड इट आउट, लैम्डा विल बी 4L डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे 4 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 3। अब मैं इसको पुट कर दूंगा सेम दिस फॉर्मूला में, सो हियर माय V2 विल बी आवर हाउ मच, फ्रीक्वेंसी वही है 480 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 300। मैंने 100 से क्यों डिवाइड किया, सिंस we require that in meters. Now you will get these two values, one is this value, other one is this value. Now take this as average, khatam, v1 plus v2 divided by 2 is your answer. But we require to find out using the second method, okay, that is why I am giving you this as an homework. Now second method is here, second method से if you apply this, आपको ये आंसर मिल जाएगी, okay, you will get your answer perfectly, which is the formula when there are successive ways, okay, given to you. Now this can be 2f naught, okay, 2f naught multiplied by the values of the lengths. Length is given by L2 minus L1 multiplied with 10 to the power negative 2, okay. अब मैं इसको थोड़ा और सुंदर से लिख लेता हूँ, दैट बी बेटर, ओके, क्योंकि नॉट जो है उस तरफ चला गया एंड यू विल बी गाइस कंफ्यूज, सर ये इतना बड़ा नॉट है, ये 0 है, ओके। सो पुट दिस वैल्यू, L2 के जगह पे तुम 70 लिखो, L1 के जगह पे 40 लिखो, यहाँ पे तुम जो वैल्यू 480 दिया, खत्म करो, और आंसर आपको ऑप्शन
कौन सी है, गिव मी इन योर कमेंट बिलो. ओके, कमेंट में आप मुझे इसकी आंसर दीजिएगा. सो 2 methods are in your screen. Understood all of you? Please like and subscribe. Let's go to the next question. ओके, पॉज योर स्क्रीन. स्क्रीन को थोड़ा पॉज करो, देखो क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो कि नहीं, क्या इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हो कि नहीं. ओके, हियर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है. द स्पीड ऑफ अ ट्रांसफर वेव ऑन अ स्ट्रेट वायर दिया गया है. और ये भाई साहब, तो हमें मास दी गई है 6 ग्राम्स की. ग्राम्स को कर लो केजी में, तो कर लो इसको -3 to the power ऐसा, ठीक है, केजी. अब लेंथ हमें दी गई है 60 cm. 60 cm को अगर मुझे मीटर्स में बदलना है, डू इट लाइक दिस. ओके, बन गया ये. अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वाह भैया, मिलीमीटर्स का स्क्वायर दिया है, वाह वाह वाह. तो मैं क्या कर लेता हूं, इसको 1 × 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर मान लेता हूं. ठीक है. नाउ एंड हियर वन मोर थिंग गिवन कि ये जो हमारी स्पीड चल रही है, इन सबकी स्पीड जो है 90 मीटर्स पर सेकेंड है. ठीक है. If the Young's modulus of a wire is, अच्छा बेटा. Now to solve this question you should understand ये Young's modulus होता क्या है. What is this Young's modulus, कहाँ से आ रहा है ये. तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि Young's modulus होता क्या. अब जब Young's modulus हम पढ़ते हैं तो आपको एक और चीज भी आनी चाहिए, इलास्टिसिटी होता क्या है. इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, कोई चीज का घिंचाव, राइट. अब एक रिस्टोरिंग फोर्स आ रही है, एलोंगेशन हो रहा है, ये सब आपको आनी चाहिए. अब जब हम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, ये इससे हमें क्या पता चलता है, यू शुड अंडरस्टैंड एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज आवर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. मैं बता देता हूँ एक छोटा तरीका से. इफ यू आर like getting stuck into what is a stress, what is a strain, sir, oh my god, I will give you a small trip to understand what is the stress and the strain. Okay, फर्स्ट लेट अस राइट डाउन व्हाट आर द वैल्यूज व्हिच आर गिवन. ठीक है, ये वैल्यूज जो हमें दी गई है पहले वो लिख लेते हैं. 16 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर. नाउ यही तो पूछा है कि एक्सटेंशन ऑफ ए वायर ओवर इट्स नेचुरल लेंथ इज हाउ मच. अब यही तो है भैया मसाला. नाउ इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक छोटा सा चीज समझना चाहिए कि चलो मैंने एक रबर बैंड को ले लिया है, चलो इस तरीके का. ठीक है. अब इस रबर बैंड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट. मॉलिक्यूल से तो बनते हैं. अब मैं क्या किया, इसकी लेंथ है L. ओके, अब वही जगह से, अब मैं वही चीज को, ये अगर एक जगह से मैंने टांगा हुआ है, ओके, आई हैव स्टक्ड इट. अब मैंने इसको क्या किया, थोड़ा खींचा. नीचे से फोर्स लगा रहा हूं मैं भैया जी, नीचे से फोर्स लगा रहा हूं. तो क्या किया मैंने, इसको थोड़ा खींच लिया नीचे की तरफ. अब जब मैं फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा हूं, तो अगर जब यहाँ पे देखो, दो पार्टिकल्स बड़े सटके थे, दो मॉलिक्यूल बड़े आराम से खुशी से सटके थे. अब जब मैं इसको खींचा, क्या हुआ, वो ही तो एलोंगेट हो गए. अब व्हाट हैपेंस, ऑल ऑफ अस आर, in this universe there is a governing rule is that everything in this universe tries to come to an equilibrium state. सबको इक्विलिब्रियम में ही रहना पसंद है. अगर मुझे बैठना पसंद है तो मैं बैठना ही ज्यादा पसंद करूंगा. मैं दुनिया का कोई भी कोने में चल जाऊं, ओके, बट what happens is we love to stay in our house, right? That is what the equilibrium is. Okay, we love to sleep in a position which we गेट अ गुड स्लीप, राइट. अब हमें वही पोजीशन में हमको अच्छी नींद आती है जिस पोजीशन में हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं. सो दैट इज व्हाट. अब ये क्या है, इधर एक मॉलिक्यूल है, अब इधर एक मॉलिक्यूल घिंचाव की तरफ वजह से वो नीचे आ गया. बट उसके जब आप देखोगे उसके अंदर एक फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, राइट. सो देयर विल बी एन अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इन ऑल द मॉलिक्यूल्स एंड दैट वी कॉल इट एज आवर रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स इसी को तो कहते हैं. अभी रिस्टोरिंग फोर्स को कैपिटल एफ कहते हैं क्योंकि इसको हम स्मॉल एफ लेके चल रहे हैं. ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स इज आवर एफ. एंड इफ आई टेल यू दैट ये जो छोटे छोटे हैं इनको मैंने एरिया में डिवाइड कर लिया कि छोटा एरिया में इतना फोर्स लग रहा है, इस एरिया में इतना फोर्स लग रहा है, इस एरिया में इतना फोर्स लग रहा है. तो यही है फंडा. नाउ इफ आई टेल यू कि ये नेचुरली यहाँ पे था, नाउ इफ आई एलोंगेटेड इट, नाउ हाउ मच आई हैव एलोंगेटेड इट, आई हैव एलोंगेटेड विद डेल्टा एल. डेल्टा एल से एलोंगेट हो गया. अब ये डेल्टा एल जो होता है इसको इसके साथ जुड़ा हुआ होता है. जब हम डेल्टा एल लेते हैं ना, डेल्टा एल एसोसिएटेड विथ व्हाट, इट इज एसोसिएटेड विथ आवर स्ट्रेन. ठीक है.
अब जब मैं फोर्स होता है ना, वो फोर्स जो होता है वो एसोसिएटेड रहता है हमारे स्ट्रेस से. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस नाउ बिकम्स, इट इज एफ बाई एरिया. कितनी रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया इज आवर स्ट्रेस. ठीक है. अब व्हाट इज आवर स्ट्रेन, कितनी खिंचाव हो गई पर यूनिट लेंथ. तो ये जो स्ट्रेन है इट विल बी गिवन बाय डेल्टा एल बाई एल. सो व्हाट इज द फॉर्मूला. अब ये यंग्स मॉडुलस कहां से आ गया सर. अब एक हुक्स जो थे, रॉबर्ट हुक, उन्होंने, उनकी तो वैसे बहुत जगहों में उन्होंने दे हैव गिवन इट्स योगदान. ओके, बट व्हेन इट कम्स टू दिस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ओके, ही टेल्स दैट आवर स्ट्रेन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे स्ट्रेस से. इसका मतलब क्या कि स्ट्रेस भी होता है जो, अगर मैं इस तरीके से भी लिख लूं कि स्ट्रेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेरी स्ट्रेन से. अगर मैं लिख लूं स्ट्रेस, स्ट्रेस इज नथिंग बट एफ डिवाइडेड बाय ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माय डेल्टा एल बाय एल. ओके, नाउ व्हेन आई टेक आउट दिस प्रोपोर्शनलिटी टर्म, जब मैं इसको निकाल दूं इधर से तो मेरी वैल्यू कुछ इस तरह का हो जाएगी विच इज इक्वल टू my Young's modulus or coefficient of elasticity or y. Okay, and now this is what our formula is and I can rewrite this formula as y is equal to, अब ये सारे वैल्यूज को इस साइड भेज लो, f डॉट l डिवाइडेड बाई डेल्टा l डॉट a. ठीक है, ये हो गई हमारी फॉर्मूला. नाउ I hope you guys have understood about what is a stress and what is a strain in a little bit more detailed manner. Okay, for more such detailed manner में अगर आपको जानना है तो stay tuned with me, क्योंकि मैं बहुत जल्द ये सब भी लेकर आऊंगा in which I will gonna teach you guys how to solve, how to study the concepts behind everything. हमें रट्टा नहीं मारना. We are not required to get by-heart anything. Okay, that is our main focus. We are not here for by-hearting things. We should. Physics is about understanding. If you know the concepts, if you know the basics and how they are coming out, kahan se yaar, acha acha acha. If you can grab that, you can solve it. Okay. So remember, what is the formula from Young's modulus? We say y is equal to FL divided by delta L dot A. अब हमें delta L निकालना है, right? So what is delta L will be? Delta L can rearrange. After rearranging it, it will be my FL divided by A dot Young's modulus. ठीक है, this is the first important formula you should require to find out this question. Okay, ये हमारी important है. But here you remember ये force है, यहाँ पे कहीं पे भी force दिया नहीं गया है. Remember, force दिया नहीं गया है. तो एक और formula आपको notes में याद होनी चाहिए. What is the speed? Speed is always what is equal to root over of t divided by mu. What is our mu? Mu जो होता है मास पर यूनिट लेंथ होता है भैया जी. ओके, इसकी यूनिट m बाय, ओके, मास की जो होती है kg डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ विच इज मीटर्स. नो वरी, चलेगा. नाउ यू शुड नो दिस वैल्यूज. ओके, नाउ t. अब क्या इसको मैं, इफ आई यूज दिस इक्वेशन, ये जो फॉर्मूला को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ. यस. अब ये रूट को मैंने उस साइड भेज दिया, सो दिस विल बी वी स्क्वायर एंड म्यू को उस साइड भेज दिया, तो दिस इज टी. टी इज व्हाट? टेंशन. अब वही चीज को मैं जब नीचे की तरफ खींचता हूँ तो टेंशन हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, राइट? यस. अब वही फोर्स है, उसकी फोर्स को हम कहते हैं टेंशन एंड दैट आई कैन रिप्रेजेंट इट बाय एफ और फोर्स. ओके, नाउ इसी वैल्यू में मैं वी स्क्वायर में डालता हूँ. वी स्क्वायर इज आवर 90 इंटू 90. अब म्यू की वैल्यू क्या है? मास बाय लेंथ. मास हमारा भैया इधर है 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय द लेंथ इज आवर 60 इंटू 10⁻². अब ये जो पावर कट गया, इधर मिल गया मेरे को -1, ये इधर से कट गया 6 0 से 0 कट गया, 9 9 जा 81 मिल गया मुझे भैया जी. ओके, 81 न्यूटन मिल गया मुझे फोर्स. अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि देखो ये -1 से ये 0 कट गया, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 9 9 जा 81. ठीक है, तुम लोग कंफ्यूज मत हो, सर ये कहां से आप इतना मल्टीप्लीकेशन कैसे कर दे रहे हो? बिकॉज मैं प्रैक्टिस्ड बहुत किया है. ठीक है, एंड दैट यू कैन ग्रैब इट आफ्टर यू गिल कंटिन्यूसली. अगर आप
सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो आपसे भी हो जाएगी, नो वरी इन दैट। ओके, नाउ आई गॉट माय फोर्स। अब फोर्स की वैल्यू जब मिल गई मुझे तो मैं क्या करूंगा, इस पे पुट कर दूंगा, तो डेल्टा एल मुझे एलोंगेशन मिल जाएगी। सो ये रस 81 इंटू एल की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, विच इज 60 इंटू 10⁻⁻²। अब एरिया सर जी वाओ 10⁻⁻6, क्या बात है। अब इसी में यंग्स मॉडुलस की वैल्यू डाल दो 16 इंटू 10⁻11। अब इसको मैं आप पे छोड़ता हूं, बट आई विल डू इट। क्यों, मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है एज एन होमवर्क फॉर यू टू गेट द आंसर, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन गई, इधर से इधर कट गया, अब इधर आ जाएगा 8 9, अब ये कट गया, चलो ठीक है। इफ यू गॉट इट यू विल गेट 0.0305 7। अब इसकी वैल्यू किसके आसपास है, इसकी वैल्यू 0.03 mm की वैल्यू आसपास है, तो हमें मिल गई एलोंगेशन कितना घिंचा हुआ, ऑप्शन नंबर डी से घिंचा हुआ। ओके, we got our answer, right? Let's go to next question. See how we have concept को हमने क्लियर किया, उस कंसेप्ट से हमने फॉर्मूलास कहां से लेकर आए, अच्छा ये फॉर्मूला ऐसे आया, ओके नाउ वी गॉट इट, राइट? सिंपल सिंपल इट इज, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। फॉर्मूलास में अपने इनपुट्स डालो और आंसर लेकर आओ, और वीर तुम बढ़े चलो, दैट्स इट। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी देखते हैं कि किस तरीके की है। ओके, पता नहीं क्या स्टक होता रहता है। लेट्स गो, हियर इज अ क्वेश्चन, अ ट्रांसवर्स वेव्स ट्रैवल्स ऑन अ टाइट स्टील वायर विथ अ वेलोसिटी v। अच्छा बेटा, when the tension in it is this much newton, when the tension is changed to t, the velocity changes to this much। हाहा, बहुत अच्छा। ठीक है, हमें क्या फॉर्मूला पता है, v जो है इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई म्यू। इसका मतलब क्या, मेरी v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, राइट? v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि पहले जितना v था, ओके, द वेलोसिटी व्हेन द टेंशन, अब ये t नॉट को मैं ले लेता हूं इनपुट एज 2.06 इंटू 10⁴। ये न्यूटन दिया गया है, चलेगा। टेंशन पहला, ये इनिशियल टेंशन है, पहला है फर्स्ट। अब बाद में उसका टेंशन चेंज हो गया, विच इज आवर टी, वी डोंट नो दैट। ओके, हाँ, वी डोंट नो दैट, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड फ्रॉम हियर। नाउ द वेलोसिटी चेंज टू, अब पहली जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी उस टाइम पे वेलोसिटी मेरी v थी, अब जब t हो गई तो मेरी वेलोसिटी वो v/2 हो गई भैया जी। हाँ, करो इसको, हाउ टू डू इट, we know that v is equal to root over of a t, we can say v by v divided by 2, okay, that is our t naught divided by root over of t। समझे कि नहीं, मैंने कंपेयर कर दिया पहले को बाद से। ओके, सो पहले को बाद से करो, सो v कट गया और मेरा 2 ऊपर आ गया, और मेरा इफ आई टेक दिस रूट ओवर एज अ कॉमन, t नॉट डिवाइडेड बाई 2, अब ये रूट को मैंने इधर भेज दिया तो बन गया 4, और इट इज t नॉट डिवाइडेड बाई 2 t, सॉरी। नाउ वी रिक्वायर टू फाइंड आउट t। अब व्हाट कैन आई से, कैन आई टेक इट एज t ओवर हियर, रीअरेंज करो, t नॉट डिवाइडेड बाई 4 कर दो इसे। t नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, 2.06 इंटू 10⁴ को मैंने 4 से काट दिया, तो ये 206 लेते हैं, चलो ठीक है। सो 206, 5 जा 20, 1 जा फिर 5 जा, सो 5.14 कहाँ है भाई, हाँ सी नंबर, सी नंबर आंख बंद करके आंसर ला दिए हमने, ठीक है। सो इट इज 5.15 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि मैंने एक जीरो ले लिया है, चलो। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। ओके, सी हाउ द वे यू गोइंग टू अप्रोच, एंड व्हाइल यू आर सॉल्विंग दिस, अगर ये आप इस तरीके से करते जाओगे तो आपको पेपर्स बनाने में भी मजे आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, राइट? Let's go to the next question now. Let's see what is the next question says. Okay, so a wire of a length L is given, ठीक है, एक length of a wire दिया गया है, and a mass per unit area, चालू बनने हो, mass per unit length है ये, so mass per unit length is 6.0 into 10⁻⁻3 kg per unit meters, okay, is पुट अंडर अ टेंशन, टेंशन में रखा गया है क्या इसे, ओहो बेचारा,
Now two consecutive frequencies that is resonates at 420 hertz and 490 hertz. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज होता क्या है सर जी? अब एक फ्रीक्वेंसी जो है वो n ऑफ एफ नॉट है, अब दूसरा फ्रीक्वेंसी जो है भैया जी एफ डैश कोई लेते हैं, चलो एफ डैश ठीक है। अब दूसरी जो है वो n प्लस वन एफ नॉट की वैल्यू में चल रही है सर जी। अब यही जो वैल्यू है, दिस वैल्यू दिस एफ डैश दैट आई एम राइटिंग डाउन इज हाउ मच 490 हर्ट्ज। कितना इजी है राइट? एंड ओवर हियर दिस एफ डैश इज आवर 420 हर्ट्ज। Okay, now this was my equation 1 and this is my equation 2. Now subtract both the equation. ये n कट गया है, ठीक है, और f naught we will get the value of f naught after subtracting. Yeah, 490 minus, see how I did this simple. अब इसको भी मैं लिख के बताता हूँ, चलो यार, ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये कहाँ से अब ये छू मंतर काली कलकत्ते वाले बना दे दो आप, ठीक है। So this is 490. So when I multiplied it, so it is f this value plus f naught is our 490. अब ये f naught and f naught is equal to this is how much 420. कहाँ है दिमाग खराब कर रहे हो बे? It is 420. Okay, so 420. So if after I subtracted it, how much I get? This value gets cancelled, right? What I left is f naught. Wow, f naught की वैल्यू कितनी आई हमारी? 490 माइनस 420 कितनी होती है? 70 होती है, 70 हर्ज, ठीक है। नाउ व्हाट आई डिड इज वेरी इजी। नाउ रिमेंबर यू गॉट एफ नॉट वैल्यू, चलेगा। नाउ हियर इट इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट एल। वाओ, ठीक है। नाउ what is else is given to you? Nothing else, right? हाँ, हमें मोबिलिटी दी गई है, मतलब यहाँ क्वेश्चन में म्यू दी गई है, सॉरी मास पर यूनिट लेंथ दी गई है। ओहो, सो हियर डिफरेंट फॉर्मूला इज गोइंग टू कम। नाउ इस फॉर्मूला को भी आप अपने दिमाग में भर लीजिए। इसको भी मैं बता देता हूँ कि हाउ वी कम टू नो दैट दिस फॉर्मूला इज दिस एंड दिस फॉर्मूला इज दैट। अब एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वाइब्रेट होती है, तो वो लैम्डा बाय 2 लेंथ उसका होता है नोड एंड नोड, राइट? Now, since I tell you my length is lambda by 2, what is my lambda? Lambda will be twice of L. ठीक है। अब चलो एक और चीज हमें पता है कि स्पीड ऑफ अ वेव v इज इक्वल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा होता है। अब इसको मैं फ्रीक्वेंसी ले लूं अगर साइड में, what will this lambda go? And it will be divided on the bottom. Wow. So v divided by lambda हो गया। v की वैल्यू कितना है? v मैं प्रीवियस अगर मैं देखूं प्रीवियस स्लाइड्स में अगर जाऊं तो v के वैल्यू मैंने कितना लिया था सर जी? यस, वी हैव टेकन, रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, इट वाज रूट ओवर ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू एंड दैट इज डिवाइडेड विथ माय वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 12. तो व्हाट आई गेट इज एन इक्वेशन फॉर माय f व्हिच इज f नॉट। दिस इज माय 1/2L डिवाइडेड बाय t डिवाइडेड बाय म्यू। देखो भैया, मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूं आपको, फॉर्मूलाज भी, मेथड बता दे रहा हूं, उसके साथ साथ हाउ दिस फॉर्मूलाज आर कमिंग ये भी आपको बता दे रहा हूं। सी हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। सो हियर इज द फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड इज दैट एफ नॉट की वैल्यू इतनी दी गई है। अब इसको इस पे डालने का और आंसर लेके आने का, अब वो मैं आप पे छोड़ू क्या? नहीं छोड़ता हूँ, चलो मैं कर लेता हूँ, चलो ठीक है। एफ नॉट हमें लेंथ निकालनी गई है, तो ये लेंथ को मैं इधर कर दिया, इसको मैं इधर ला दिया। ओके, व्हाट आई डिड, आई हैव जस्ट इंटरचेंज द वैल्यूज। ओके, व्हाट आई get is L, which is 1 divided by 2 of f naught, which is root over of t divided by mu. Now what is those with the values? That's it. f naught की वैल्यू 70 आई गई थी, हमें t की वैल्यू कितनी दी गई थी इधर? 6 into 10 to the power negative 3, 6.0 into 10 to the power negative 3। अब उसके नीचे हमें दी गई थी, ये तो म्यू की वैल्यू है, काहे रे काहे डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। तो अब जो है ये t के वैल्यू, व्हाट इज t ओवर हियर? 540। ओके, होती है ना कंटिन्यूसली, अगर आप बुकते जाओ तो ऐसे होती है, डिवाइडेड बाई आवर 6.0 into 10 to the power negative 3। अब इसको करो और आंसर मुझे कमेंट में डाल के दो। आई वॉन्ट आंसर इन द कमेंट बिलो। ओके, नाउ हियर इज द trick to solve any question. If you know the methods, if you know the answer, if you forget the formulas which are there, remember, that is why I'm saying
आप हमेशा 2 नोट्स रखो, 1 नोट्स फुल ऑफ फॉर्मूला चैप्टर होने चाहिए, उसके फॉर्मूलाज होने चाहिए। जब भी आप क्वेश्चंस बनाने बैठते हो, जब भी आप कुछ भी करने बैठते हो, अगर इफ यू स्टार्टेड रीडिंग अर्ली मॉर्निंग, रिवीजन इज मस्ट। आप पढ़ लेते हो, ठीक है, एंड यू डू द मॉक टेस्ट एंड यू गो टू द एग्जाम, दैट विल नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, ओके, अनटिल अनलेस यू आर रिवाइज्ड, आप पूरे फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज कर रखे हो। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, okay, here is the question. Two identical strings x and z. Pause your screen. जरा आराम से पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो भैया जी, क्या बोलता है ये, और फिर आई एम हियर टू सॉल्व यू। ओके, नो वरी। टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स x एंड z, ये दो स्ट्रिंग्स हैं मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, दोनों एक ही मटेरियल के बने हैं, ठीक है, हैविंग अ टेंशन ऑफ tx एंड tz, ठीक है, tx और tz इनके टेंशंस हैं, नो वरी। इन देम इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर 450 हर्ट्ज एंड 300 हर्ट्ज, ओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज अगर इनके दिए गए हैं 450 हर्ट्ज और 300 हर्ट्ज, नो वरी, देन द रेशियो ऑफ tz, मतलब ये जो है f नॉट दी गई है, ठीक है भैया जी, समझ रहे हो। अब जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस बनाए, ठीक है, आपको कुछ रिलेशन समझ में आए, ये वाले राइट, ये वाले राइट, ये वाले, ये हाँ, यू रिमेंबर दिस वन राइट, वी आर गोइंग टू यूज दिस सेम फॉर्मूला, ओके, वी आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला। हिंट्स आने चाहिए, सी मेरे को भी दिमाग में हिंट्स आए जा रहे हैं व्हेन आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एफ नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 12 विच इज रूट आउट ऑफ टी डिवाइडेड बाई म्यू। टी तो दी गई है, इनकी रेशियो में पूछी गई है टी एक्स डिवाइडेड बाई टी जेड, जहां पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, सी रिमेंबर फ्रीक्वेंसीज आर गिवन टू यू एज वेल एज टी वैल्यूज आर गिवन टू यू, व्हाट यू कम टू नो दैट एफ नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। यही तो हिंट चाहिए मेरे को, यही ब्रेनस्टॉर्म, यही इतनी तुम्हारी अगर नॉलेज बढ़ गई, दैट इज मस्त, एकदम सुगर कोटेड हो गए तुम, ओके, ठीक है। Now what you do, simple put the value, get the answer after taking the ratios, okay। Now what I see, f नॉट दी गई है, let's say fx की वैल्यू जो है वो मेरी which is our equal to root over of t जो है tx है, ठीक है। आओ what I can say it is अब ये जो रूट ओवर इसको अगर मैंने भेज दिया तो fx square is equal to tx, same way I have did for my f of z स्क्वायर इज इक्वल टू tz, इन दोनों का मैंने ले लिया रेशियो। अब ये रेशियो किस तरीके से, tx बाई tz विच इज इक्वल टू f of x स्क्वायर बाई f of z स्क्वायर, ठीक है। नाउ हियर यू वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर, द टेंशंस व्हिच आर ओवर हियर, ये वैल्यू मुझे दी गई है, हाँ ये वैल्यू भी मुझे दी गई है, चलेगा, I can do it like this, okay, I can do it like this because I need my tx and tz। now एक और छोटा तरीका है, हम क्या करते हैं ना, इसको स्क्वायर बाद में लेते हैं, चलेगा, हम इसको पहले रूट में ही रखते हैं, let us keep that in a root, we will keep that aside, we will take it as a root, first we gonna divide, हम लोग इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, since the frequencies हमें बड़ी वैल्यू दी गई है, right, so that is my strategy, see। सो व्हाट आई कैन डू, 450 को मैंने डिवाइड किया 300 से, तो मुझे बन गया, ये है 15 से और ये है 10 से और ये है 3 से, ये है 2 से, तो 3/2 आई गॉट इट। अब इस रूट को उधर भेजो ना, सी हाउ इजीली वी हैव डिड। तो अगर मैं इस रूट को इधर भेजा तो आई गेट 9/4, 9/4 कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग 25, सी ऑप्शन नंबर बी, कितना इजी है राइट। So see how these are very easy, how you are getting these answers very quickly, until unless you remember the 6 golden rules। जब तक आपको ये 6 important golden rules आपको नहीं पता, तब तक आप नहीं कर सकते, okay। So with that we have completed the chapter's important questions, okay। With that I am going to complete our class by giving you the 6 golden rules, okay, for success। if you want to be a successful person in your life, remember these 6 golden rules, okay। the first one is always the hard work, hard work सबसे important है, ठीक है, hard work करो क्योंकि ये आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। दूसरा is how patient you are in your life,
कितना पेशेंस है तुम्हारे अंदर। कभी कभी होता है हम सर इतने मेहनत करते हैं बट हमें फल कब मिलेगा सर। अब पता नहीं कब मिलेगा बट मिलेगा तो जरूर, क्योंकि एनीथिंग यू शुड रिमेंबर द, आइंस्टाइन ने भी कहा है, हर किसी ने कहा है दैट एनर्जीज जो होते हैं वो कभी भी मास में बदलते हैं, मास कभी एनर्जी में बदलते हैं, कभी ना कभी इफ यू हैव डिड कर्मा इज हियर विथ यू, ओके, वो आपको रिजल्ट देगा। नेवर थिंक अबाउट द रिजल्ट, ऑलवेज ट्राई टू बी पेशेंटली वर्किंग ऑन योर हार्ड वर्क, ओके। नाउ द थर्ड थिंग इज कंसिस्टेंसी। आप कितना कंसिस्टेंटली उस काम को कर रहे हो, ओके। अब अगर सुबह आपका एक एक ही दिन आपने रूटीन बनाया, ठीक है, एंड यू शुड कंटिन्यू दैट रूटीन अनटिल अनलेस यू आर वेरी मच श्योर कि आप उसमें महारत हासिल कर लिए हो। सो कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब उस कंसिस्टेंसी के साथ आता है यार सेक्रीफाइस। आई लव बिरयानी, ओके, बट आई हैव टू बिल्ड अ बॉडी, आई नीड बिरयानी विल मेक माई बॉडी लीन, नहीं ना। इफ दैट इज एनी प्रोसेस, इफ आई हैव टू स्टडी, I have to do a lot of sacrifices in my life, okay, to achieve that goal. So remember, sacrifice is very much important, okay. If you did sacrifice, you will, I think you will get it, okay. Now, the fifth important thing is how motivated you are, okay. How motivated you are to get that goal, okay. That is your fifth golden rule. And lastly, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर इतनी कॉन्फिडेंट रखो, डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट, बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंट वो इंसान कुछ भी कर सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है, आप ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस में एक सिंपल डिफरेंस बताऊं। एक ओवर कॉन्फिडेंट बंदा बिना काम किए वो बोलेगा कि मैंने सब काम किया एंड ऑल, ओ ही विल बगर ऑफ, ही विल लाई एवरीथिंग, ओके। लायर इज अ very good example for a overconfident person. But a self-confident person will always be motivated. वो क्यों किस तरीके से मोटिवेट रहेगा, क्योंकि वो बंदा वो काम कर चुका है एंड दैट विल ब्रिंग हिम द कॉन्फिडेंस दैट या आई हैव डिड दैट थिंग, आई नो आई कैन टैकल दैट सिचुएशन, आई कैन नो आई कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स, राइट। these are 6 golden rules for your success. Remember, write down on your board, पेपर कहीं पे भी लिख लो, ओके। एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर मोर सच वीडियोस, क्योंकि मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ओके। सो स्टे ट्यून्ड विथ दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी। बाय बाय। Lastly, do whatever you want to do, but don't trouble your mother, okay? See you.